लाइबेरिया जो कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में आता है। ये अफ्रीका का मैप है पूरा। इसमें ये पार्ट जो है ये लाइबेरिया है। इसका जो कैपिटल है मुनरोविया। A Liberia, país que caracterizou por 14 anos de guerra civil brutal. A primeira nação no continente africano a declarar sua independência em 1847. A Liberia tornou-se infame nos anos recentes por causa dos soldados, crianças e violência sexual rampante. Mas lentamente e gradualmente o país anda com dificuldade na direção da estabilidade ajudada pela Organização das Nações Unidas, que está aqui numa missão de manutenção da paz. Hoje, Liberia está num momento crucial na sua história porque vai à sua segunda eleição democrática. Esta eleição decidirá seu curso futuro, em direção de paz e estabilidade, violência e caos. O ONU deve assegurar que a eleição acontece num ambiente seguro sem problemas. Auxiliando a operação da ONU é uma unidade especial da Índia, contingente policial só das mulheres. Posto anualmente desde 2007 é a primeira tal unidade para já tomar parte na qualquer missão de manutenção da paz no mundo. सिंगल वे ग्रेनेड 3 वे ग्रेनेड इसमें एमिनेशन भी नया लेकर जाते हैं वही वाला उधर से हैंडिंग टेकिंग करते हैं हैंडिंग टेकिंग उधर तैयार है। शॉक बटन नहीं है इसमें लिखा हुआ बटन नहीं, वो तो मेरा बने ले लिया। ये कहाँ लिखा है लिया है हाँ लिया। इलेक्शन का माहौल चल रहा है। ये अभी भी मेरे ख्याल से इलेक्शंस के रिगार्डिंग ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी पड़ती है सामने, वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रदर्शन होते रहते हैं, तो आप लोगों ने बहुत ही अटेंटिव रहना है। चाहे आपको वो बात इंपॉर्टेंट लगे या नहीं लगे, लेकिन आपको लग रहा है कि नॉर्मल से हट के है तो आपने उसका ज़रूर हमें बताना है। पढ़े सावधान, टेक चार्ज। A unidade indiana de polícia, formada só das mulheres, tem 102 mulheres que estão ativos nas operações de segurança. E para apoiá-los a executar seu trabalho, há 23 homens na forma dos motoristas, mecânicas, cozinheiros e oficiais de logística. Uma das funções principais da unidade é proteger o escritório do presidente do Ministério das Relações Exteriores dia e noite. मिली थी राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति अंदर है ओके ऑलराइट ओके बाय। Poonam Gupta é a comandante desta unidade, a única oficial mulher a servir 2 vezes na Liberia. Ela veio com o primeiro contingente em 2007. 12 hours per shift, 2 vehicles, one in the morning, one in the evening। 12 hours लंबा नहीं हो जाएगा 12 hour shift। चलो भाई यशवीर। Poonam está no caminho para uma reunião preparatória para a eleição. Ela traçará uma estratégia conjuntamente com a ONU e agentes da polícia liberianos sobre o tema como melhor dispor suas forças. Pela primeira vez, as eleições estão a ser conduzidas pelos liberianos eles próprios. They are conducting it. We are just observers and supporters whenever they need our guidance and support. And this was the time when it will be tested that the democracy is here to stay or not. Will the people would accept the democratically elected government? If the current president wins or some other person wins, but the democratic process should move on. We are the first ones to arrive. The UN had 3 missions here.
this is the latest mission which was established in October 2003. 8 years of unbroken peace is a very, very big achievement, and if we are able to conduct and complete the election and complete the transition properly, peacefully, it's a big achievement for UN. हमारी उस दिन हमारी नफरी ये रहेगी ना, हाँ, नाइट पेट्रोलिंग तो नहीं रहती ना उस दिन, दोनों बंकर तैयार रहेंगे, दोनों जगह के बंकर रहेंगे, दोनों बंकर जाएंगे डिप्लॉयमेंट में, NEC में भी और एल्वा में भी. Over the period of time, Liberian National Police and other law enforcement agencies like the border, immigration and naturalization, the many parts of governance, slowly and steadily they are coming into their own. They may not be as proficient as you want them to be, but slowly and steadily they're coming into their own. You cannot give a person 10 years experience in one day. That has to be earned. So I think in due time they will be able to take responsibility for their own self. आप बात कर ले पहले. नहीं क्यों नहीं? नहीं. खाना खा के आया कि नहीं? खाना खाया? क्या खाया? क्या खाया? चावल, रोटी. One, दोनों से 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ऐसे आप कराटे CRP में किसी का मार्शल आर्ट वगैरह, बाकी तो एक्सरसाइज वगैरह एरोबिक्स वगैरह घर में भी करते हैं, अभी भी करते हैं, बच्चों को भी करवाते हैं, तो कोई ये नहीं. मेरे से अच्छे मेरे बच्चे कर लेते हैं. कितने बच्चे आप? 2 है, एक 14 इयर्स का लड़का है, 10 इयर्स का लड़की है. दोनों मैंगलोर में. ये एक्सरसाइज मेरे लिए नहीं है. I'm 40. Yes, exactly 40. Well, I think it was a discussion with member states in general about increasing the number of female peacekeepers, including in the police. And then it was during those discussions that India in particular offered to send an all-female unit. It's not that it's only an all-female unit that can achieve the goal we are after. A mixed unit could also do it. But the challenge is that many of the countries that are sending police to the United Nations missions are not sending very many female officers. A Índia é um dos 5 superiores contribuintes das tropas para as missões das organizações das Nações Unidas e foi na vanguarda para ativamente recrutar mulheres na força da polícia. Hoje tem 3 batalhões das mulheres do que o contingente liberiano é selecionado cada ONU. অসমত চাকৰি পোৱাটো টানেই আছিল খুব, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ মানে ফ'ৰ্চতে জইন কৰোঁ মানে, আৰু মোৰ মানে দেশ সেৱাৰ মানে বহুত ইচ্ছা আছিল, আৰু ফ'ৰ্চৰ ডিচিপ্লিন বহুত ভাল লাগিছিল. মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা মানে ভাবিছিলোঁ মই জইন কৰিলে ভাল হ'বনে, মানে সকলোখিনি হোৱাৰ পিছত মানে মোৰ মানে মেডিকেল ফিজিকেল মই সকলোতে পাছ হৈ গ'লোঁ, মানে কোৱালিফাইড হ'লোঁ. তাৰ পাছতো মই মানে ভাবিছিলোঁ গ'লে ভাল হ'বনে নহয় বুলি. দেউতাই মানে গম পাইখিনি, মোৰ পাপাই গম পাইখিনি মানে বহুত মানে এনকাৰেজ দিছে, কিয় মানে নোযোৱা, বহুত ভাল মানে নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ মানে ইমান দেশৰ কাৰণে কৰিব তুমি চান্স পাইছা, কিয় নোযোৱা বুলি মানে মোক বহুত এনকাৰেজ কৰিছে. किसके पास नहीं मैं चेक करूंगी क्योंकि वहाँ उसको कुछ भी नहीं मिला इमरजेंसी में. ग्लव्स, रेनकोट, बारिश आ रही है, ठीक है. आईडी सबका है, पॉकेट में हाथ डालो. ओके, सब जुड़ जाने के लिए तैयार है, सब ठीक है. অন্তৰটো বহুতেই হয়, কিয়নো আমি ইণ্ডিয়াতে
নাইট ডিউটিটো কেতিয়াও কৰাই নাছিলোঁ নাইট মানে আমি মানে ৰাতি হোৱাৰ পিছত কেতিয়াও বাহিৰত ছোৱালী তেনেকৈ বাহিৰত যোৱা নাছিলোঁ আৰু ইয়াততো আমি পুৰা নাইটতো ডিউটি যাব মানে পাইছোঁ আৰু ভয়তো লগা নাছিল ফাৰ্ষ্ট টাইম অলপ মানে হেৰি হৈছিল আৰু কেনেকুৱা মানে বাহিৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম পেট্ৰলিং ডিউটি আহিছোঁ আৰু তাতে নাকা ডিউটিত হেৰি হৈছোঁ কাৰণ অকণমান মানে অসুবিধা হৈছিল আৰু মানে এলাৰ্ট তথাপিও আমি বহুত এলাৰ্টকৈ আছিলোঁ অসুবিধা হৈছিল যদিও মানে এনেকুৱা বেলেগ অসুবিধা হোৱা নাছিল তথাপিও মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম সেইকাৰণে অকণমান মানে ডিফিকাল্টটো হৈছিল আৰু गाड़ी नंबर है 16800 नाइट ड्यूटी चेकिंग के लिए आउट हो गई उठे सबके कदम बोररम पम पम ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो सीडीसी वोटर्स सीडीसी के वो है कैंपेन वाले सीडीसी क्या अरे पता है किसी को भी मालूम नहीं अच्छा सबको पता है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पता है ऐसे मत बोलो मैडम लाइब्रेरी में 8 महीना हो गया इतना भी पता नहीं होगा क्या इतना भी पता नहीं होगा क्या attention behave like a policeman go on duty you focus you are going to serve and protect. Focus, prepare yourself, have a mindset, keep yourself safe. Watch each other, work as a team. Do not work as an individual. Don't take it for light. It's serious. There's no small election. Zone 3, Changchak 1, yes. Zone 3, yes, 2. How many people must? 2. Yes. Zone 4. Zone 4, yes. 2, yes. Cada noite, uma secção da unidade indiana junta-se na sede liberânia da polícia, onde eles são designados às suas funções de patrulhamento de noite. पिंडो शैलजा जी मैडम रूम नंबर 2871 जोन 2 871 जोन 3 तो है जो कोऑर्डिनेटर होता है वो हमको ड्यूटी बांट देते ऐसे ऐसे जोन में जाना है यूएन पुलिस के साथ हम जाते हैं यहाँ से उसके बाद हम जिस जोन में बांटा गया उस जोन का पुलिस थाना में जो बेस रहता है वहाँ जाते हैं वहाँ से लाइब्रेरी नेशनल पुलिस को हम लेते हैं क्योंकि वो हमारा गाइड रहता है एरिया उसका है ये जगह उनकी है वो उनके बारे में जानकारी रखता है इसलिए हम उनको लेके जाते हैं ऐसे कोई एक्टिविटीज़ ना लगे जैसे कोई हथौड़ा लेके जा रहा है कोई ऐसे औजार लेके नहीं जा रहा है कि किसी को कत्ल करे या किसी का घर तोड़ने जा रहा है या चोरी करने जा रहा है लूट करने जा रहा है इसीलिए जाते हैं यूएन पुलिस के पास और लाइब्रेरी नेशनल वाले के पास वेपन नहीं रहता हथियार नहीं रहता और हथियार बंद है हम लोग हैं इसीलिए हमें लिया जाता है रात को कि हम उसके प्रोटेक्शन करते हैं It's a big injury. I better sir. No, not minor. Big. What kind of injury? Yeah, cord. There's a cord. According to the story, there's a cord. ভয় ভাবটো বা বেলেগ নানুৱে মানে মনলৈ নাহে মানে মুঠেও ঘৰৰ কথা বা বেলেগ কিবা মানে এনেকুৱা মানে মনলৈ নাহে মানে আমি কি হ'ব বা এনেকুৱা বুলি আমি মুঠতে ড্ৰেছ পিন্ধাৰ পিছত ডিউটি যাব লাগে তো লাগে আৰু যেনেকুৱা ধৰণে ডিউটি নহ'লে আমি মানে ডিউটিত মানে পূৰা মানে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখাবলৈ মানে বহুত মানে হেৰি
সেইটোৱে ভাবোঁ আৰু মেইন। Today they have checkpoint here, Nepal's. The new one. Papa, do carry on, please. Situation report. Normal. जहाँ भी मतलब इंडिया में 19 साल कंप्लीट किया, अब 20वां साल यहाँ मिल रहा है तो अच्छा है। चैलेंज फेस करने के लिए हर जगह मिलता है, तो ये भी एक जगह मिल गया है। कम से कम सर्विस में बाहर जाके आए हैं, ये भी तो एक है। क्योंकि हर वक्त चाहे ड्यूटी हो, चाहे वो कोई भी हो, पीटी हो, वो परेड हो, कोई डेमो हो, कोई भी चैलेंज हो, उसको चैलेंज की तरह देखो तो बहुत मज़ा आता है। नौकरी को चैलेंज की तरह लो और उसको हर वक्त को खुशी से जीने की। दुख तो लेना ही नहीं है, क्यों, इसको करनी है ही, क्योंकि हमने कुछ चॉइस किया। ये नौकरी मैंने कुछ चॉइस किया क्योंकि वर्दी की शौक था। उस टाइम में उड़ान एक सीरियल आता था, उससे हम इंस्पिरेशन होके किरण बेदी को देखा, उनसे जॉब को मैंने चॉइस किया है, उसके प्रति तो वफादार तो रखना पड़ेगा। ऐसे मुझे कोई फोर्स में आज तक कोई भी तकलीफ महसूस नहीं हुई है। अभी इनको अब दाहिना टर्न करा के वाटर गार्ड में ले जाएं, ठीक है। अभी आप पीछे खड़े हो जाए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको आगे बुला लेंगे। चलिए, नजर सामने। There is a committee of military and police advisors in United Nations headquarters. They're coming to see how we are performing. Are we performing within the mandates? Are we being utilized properly? Is the mission looking after us properly? Things like that. यही उसी के बिल्कुल exactly उसके नीचे. Out of the police advisors which are coming, there are few donor countries and some from the troop contributing countries also. So it is interesting for both. Ones who give the money for the missions to run, so how it is being executed, how the money is being spent, is the money is being spent properly, and the troops contributing countries from the angle that are the troops which are being sent to the missions are they being utilized properly. हमारे यहाँ आएंगे विजिट कर रहे हैं। एमपैक मिलिट्री एंड पुलिस एडवाइजर्स जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए सभी कंट्रीज के, वो आ रहे हैं, ठीक है। तुमने वर्दी क्यों नहीं करा? जाएंगे 2 मिनट में लौट के टाइम क्या है? पूरा कचरा घर बना रखा है, इसको ठीक करोगे? जाए फटाफट करते पड़ते मिल गया, तुम भी जाओ।
when we came here in 2007, the first female unit in my force had already come up in 1986. So it already had an experience of 21 years. And I have worked in a female unit for around 5 years. So I know the ins and outs, the difficulties that problem we face and how do we overcome them. This is a unit being looked up by so many people here. It is a challenge to keep the good work of my predecessors. It's difficult, but at the same time, you have to keep on proving that being the female unit is no less than anybody else. For me, I have to say that it's better than the most. For the simple reason that I find women more disciplined and more job oriented. Give a task to a man and a woman and you see the result. I find the women take less time, they give you a better quality of job, the workmanship is better. For us, the duties are for FPUs, it's not for female FPUs. When we do the night duties, the male counterparts are doing the same duties that we are doing. It's immaterial, Today I am sitting as a quick action force at the LNP headquarters. Tomorrow it will be Nepalese, day after tomorrow it will be Jordanian. It's the same duty. And in 2007 the duties were much tougher. So we used to do the night foot patrols. 40 officers would be patrolling those dark alleys, dark areas with no lights, no electricity, throughout on their foot, You have the armed robbers, many more incidents of armed robberies than now. So nobody doubted us because we didn't doubt ourselves any time. Enquanto Poonam Gupta e a sua unidade preparam para a eleição iminente, da volta na Índia, um contingente novo já está sendo treinado para o próximo termo em Liberia. This is an excellent firing. Very good. I call them the Indian Formed Police Unit number 1 because we have another Indian Formed Police Unit number 2. That is an all-male unit. And what I stress first and foremost is that both of them are very professional police officers. And the Formed Police Unit 1 then happens to be women. I think it's most important to underline they are very professional officers. And thereby they are demonstrating that women can do policing. Secondly, I think they have contributed quite a bit to increasing the number of Liberian women who have signed up to service in the Liberian National Police. And there the percentage is now 16%. It's still not the target of 20%, but it's still fairly good. Can I call you back in 10 minutes? We have police officers from 39 countries. And our main objective is building up a new Liberian National Police in accordance with the international standards of democratic policing. By its very presence in Liberia, more than its intrinsic contributions, participating in security responsibilities and also building capacities of the Liberian National Police, by the very fact that the women police officers are seen and visible, their sheer presence goes towards really reassuring the women's section of the society. From the police services point of view, there are other options available. But from the symbolic point of view, perhaps there are no other options. Even though they are female or seen, they are women of substance. They have left their homes and family, abandoned their family to come down to my country and help and work alongside with the government to bring peace and stability. So I feel happy and I really want to appreciate and I want to commend them. I must say that the Indian foreign military has been very helpful in Liberia. They have assisted us in maintaining peace. As you know, we are a fragile nation.
They are here assisting, working alongside our police officers at night on patrol. You can see them on duty at the Foreign Affairs, the mansion where the president is. They're also at our prisons. So without them, we would not be as successful. Liberia in 2007 was completely different from what it is right now. The ex-combatants were quite a lot big organized groups. There were quite a lot of clashes between police and the ex-combatants. For that, I have not seen even a demonstration from them for the last 8 months here. With the history of the neighbors that Liberia has, it's not a very nice history to have. All 4 countries in this region, they had some kind of civil wars happening in their past. So the weapons are available. They had children of very young age, 7, 8, 9, 10, who were holding weapon and fighting for some group or otherwise, which they even don't know. In post-conflict scenario, they tried to take all the weapons away from the civilian population. But still some remain. Now in 2011 also a few remain. In 2007, my troops were caught in a situation where there was an armed robber inside the house and he was firing at them like randomly. And it was very bad. My troops had to fire back, and finally the armed robber was killed. And an AK-47 was recovered from him, and few magazines also and rounds also. So when you go for a peacekeeping operation, you don't expect this. Live rounds coming at you. So now the challenge is different. At that point in time, it was about the reintegration of the ex-combatants who was fighting. Now it is about capturing the seat of the president of Liberia. O atual presidente ganhador do Prêmio Nobel de Paz, Ellen Johnson Sirleaf, está enfrentando um desafio forte dos seus principais adversários, Winston Tubman, e o seu companheiro de chapa, George V., uma estrela do futebol nacional. फाइव जोन छोड़ के ना कहीं भी ड्यूटी लगाए, सिर्फ 5 जोन डेंजर है।
हम गए कहाँ, वो जंगल में। हे भगवान, जैसे गए ना, धप 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 पिस्टल का शूटिंग होते ही हम वहाँ से भाग। फिर गए 15 मिनट के बाद जाके पकड़ के ले, इतना इतना लंबा वाला वो दाव पकड़ के। अम्मा मम्मा तो घर में। अच्छे तरह से चले जाओ। सासू माँ के पास साल में 2 महीना रहेगी ज्यादा से ज्यादा, यहाँ रहेगी 10 महीना। तो यहाँ वाली ज्यादा काम करेंगी, उधर वाली ना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं कर रही हूँ। बताओ गुस्सा किस लिए हो रहा है? क्या इधर ये ऑफ कौन कर रही है? ये तुमने दिया ना, इधर से ऑफ कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टर है। चेंज करेंगे अपने आप को सर्टिफिकेट ले रहे हैं। मैं बोलते रही अपने दिखाई ये भी खुला ही पड़ा, ये भी खुला पड़ा। ये खाली ये लगा रखा है, ये तो ऐसे नीचे से निकल जा रही, देख रहे हो। लाइबेरिया ये कैरियर एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी है। दूसरा फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। तीसरा एक्सपीरियंस, हम अपने आप को जब अपनी वापस फौज में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, तो हम अपने आप को कैसे रेट कर पाते हैं कि हमने एक इंटरनेशनल सिनेरियो में काम किया है जहाँ पे लगभग हर देश के लोग आए हैं, उनके साथ हम कितना मेल मिलाप से, कितना सौहार्द से काम कर पाते हैं, और वापस उस एक्सपीरियंस को हम अपनी फोर्स में ले जाके कैसे एम्बेड कर पाते हैं। मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में ही है और मेरा एक बेटा है, अभी नवंबर में वो 2 साल का हो गया है। तो आपको कैसा लगता है अपने इतने छोटे बच्चे को घर पे छोड़ के आप यहाँ बहुत दूर आ गए? I choose not to answer. Do you ever regret coming here for such a long posting? Yes, I think that if the period was just 6 months,
like the other FPUs also staying here for 6 months only. Since we are females, we have families back home, so it becomes a long time. 1 year becomes too long for us. Before coming here, I had not realized this, but that I will feel so homesick, but now these remaining 4 months are, I'm just waiting for them to get over. मैं एक अपने बेटे को मैंने पोएम लिखी है. I long to kiss your charming face, want to count steps in your pace, want to hold my world in my arms, want to be till in eternity in this embrace. Can the wrong done by me be somehow undone? Can I still be somehow considered worthy of your pardon? नहीं, हमारी जॉब ही ऐसे है ना, तो हम इंडिया में रहते टाइम भी हम मतलब बच्चे के साथ कभी में से रहा नहीं. मैं 11.5 महीने में छोड़ गए थे उसको. दुख जिस दिन छोड़ के आई थी उस दिन थोड़ा उसकी माँ की ममता से देखोगे तो मतलब उस दिन थोड़ा लगा था, लेकिन अभी आदत हो गया. अभी कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है, मतलब ऐसा बिल्कुल फील मन में नहीं आता है. मतलब हम सभी लड़कियां ऐसे घर में अपने बच्चे को मम्मी पापा के पास, कोई अपने बहन के पास ऐसे छोड़ के थे, तो हमको कोई फील नहीं था. एक दूसरे को देख के हम अच्छे से रहते सभी. ज्ञानी, सुमन, माता কি কৰি আছা? মাম খালা? কোৱা আকৌ. All my family is in the teaching business. They're all teachers. I'm the lone odd one out. They're supportive. Once they know that I have to do this, then I have to do this. They get worried, you know. Once I was in Srinagar and there was a Fidain attack going on. The Prime Minister of the country was to come to Srinagar, and there was a Fidai who took up a position on the Shankaracharya hill, and I was standing just under it, and there was bullets running around, and I didn't realize I somehow dialed my home number. I didn't know how I did it, and they were hearing everything, and they were getting worried, and I didn't know that they were hearing. So, and I'm lying to them, it's okay, everything's fine, and all, and so at times they get worried. They get worried about my being here also. Excuse me. Hello. Como o dia da eleição aproxima-se, a campanha dos dois principais partidos, Partido e Unidade e do Congresso, para a mudança democrática está esquentando. Eles têm uma história de confronto cada vez que há uma possibilidade de confronto. आपको पता है 11 अक्टूबर को इलेक्शंस है. किसी की 12 घंटे की ड्यूटी आएगी, किसी को 6 घंटे के रेस्ट के बाद दोबारा ड्यूटी पड़ेगा. और अगर इलेक्शन शांतिपूर्वक निकल गया तो ठीक, अगर शांतिपूर्वक नहीं निकला तो इस तरह की लंबी ड्यूटी के लिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ेगा. जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है. लोग अपने घरों में खाना जमा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है. इसका मतलब वो डर रहे हैं. ये कॉन्फिडेंस जगाना है लाइबेरिया के लोगों में कि इलेक्शन आ रहे हैं, हम उनकी देखभाल करने के लिए हैं, उन्हें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है. जो चीज गैस से काबू आएगी उसको गैस से काबू लाया जाए, जो चीज लाठी से काबू आ जाएगी उसको लाठी से काबू लाया जाए. और हथियार लास्ट रिजॉर्ट है, लाइव राउंड लास्ट रिजॉर्ट है. ये बात दिमाग में, अपने जहन में ठीक से घुसा लीजिए.
Babu must win. Babu all the way. We are citizens. We are program of democratic change. We are peace. We are restore peace and democracy in this country. Women are supposed to be compassionate. They are not aggravated so easily. In a situation of communal tension, they are able to pacify the parties involved with a very compassionate. Aggression creeps up when people are dissatisfied or when their rights are crushed. So we are there to make them believe that we are there. So you need not resort to violence. We are there to help. It is there in United Nations that we have a name called peacemakers. But in India also, we are doing similar kind of duties. We want to show the world that we are a peaceful people and that we can obey the rule of law. We needed the UN mission in Liberia when we were emerging from war. Liberia will have to be able to sustain itself. We have been given a lot by the UN mission, by our partners. Before they leave, I would like to see us be able to sustain those things that they have given us and not to just leave us with this huge gift that may be impossible to sustain. But I think Liberia is on the right track. Sob os olhos vigilantes dos observadores internacionais, e liberanos saíram em números grandes para lançar seu voto. Apesar das chuvas pesadas, os eleitores são quase 72%. The goal of a UN mission is, of course, to assist the government in the country where we serve to build its own capacities and eventually to be able to stand on its own feet. We have already been here 8 years. We have changed in the sense that we have reduced our strength from 15 military soldiers to 8,000 now. And we will, of course, after the election in the beginning of 2012, look at how we can reduce further, what are the needs, because the aim is to ensure that the mission eventually can leave Liberia and that Liberian security institutions can manage any threat to security on their own. Ao alívio dos todos, a eleição passou pacificamente. O presidente Ellen Johnson Sirleaf continua em escritório para um segundo termo. A Polícia Liberiana Nacional conseguiu com êxito controlar a violência que, em resumo, emergiu quando os resultados foram anunciados, agradecendo ao auxílio das forças de paz da ONU. লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা মৰিবলৈ ভয় নাই মুকুতি মেঘৰ মহান মেজি নিজল ফিৰিঙতি চাই
পুৰোহিতো যদি থিতাতে আঁতৰি কাষৰে মোৰ সাজায় আজিৰ ডেকা ল'ৰা জীৱন পণ কৰিছে মোৰ হাড় চকুলো কলিজাৰাই মোৰ হাড় চকুলো কলিজাৰাই লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা মৰিবলৈ ভয় নাই পুৰা याद